Thank you so much, Raida. Thank you so much for organizing this thing. Thank you all of you for taking the time out and be part of this very important. Hello. Yeah. Okay. Thank you so much, Javed Bhai. Thank you all of you for taking the time out for this very important IPO conference. This is very key for us because this, attracts more and more equity raising and debt raising. Uh, we are very thankful to Honorable Finance Minister also, who have been very active for this conference. Thank you, Akif Sahab, also for being very active in this conference as well. So. Equity raising is a key thing for Pakistan Stock Exchange because it is Pakistan Stock Exchange, not Pakistan Capital Market. Let me tell you that the total market capitalization of equities is 9.4 trillion. It's around $33 billion. And if you compare the debt, we are working hard on the debt side as well. The total issue is around 600 to 650 billion. And definitely it will be matured as well, so the new debt issues will also come. So as far as the equity raising, it's so important for the development of the country. It gives a new capital for the growth, for the advancement, for new expansions. Musaddiq Sahab did a wonderful job by, working very hard in the year when nobody was coming, I think in the period rather, not only 1 year, for the last couple of years, at that time nobody was coming. But he came up with the idea with a new vision and with new investment plans. If I remember correctly, the total investment was around 12 billion, and he actually combined equities and debt between 5.5 billion of equity and then 6 billion of debt. So equity raising is very important for the development of the country, of the economy. And definitely it will kick in large-scale manufacturing growth as well. It will kick in the overall growth in the GDP growth. And not only that, it also gives liquidity for the shareholders as well. And it unlocks the valuations as well. If you go for partnerships, if you go for joint venture, if you go for M&A activities, you can have a lot of advantage by having a listed entity. For example, if I hear correctly, systems are doing many tech acquisitions by using the currency of stock. So they are giving stock in terms of as their value for acquiring new tech companies. So definitely IPOs have played a significant role for the growth of the groups, for the growth of the market. Many companies have taken advantage of this opportunity, and as Musaddiq Sahab said, that you don't have to just raise money, you have to inculcate many other attributes as well in the system, in the corporate governance as well, to kick in the growth. I'm very privileged to have with me the listing committee members of PSX and SECP. We have the listing head of PSX, Abbas Sahab. We also Ahmed Abbas Sahab. We also have Sajjad Ali Sahab, who is the head of Primary Market Approval and Development Department. We also have Ali Asghar Sahab. He is the Chief Executive Officer of TPL Asset Management Company, and he was also engaged in many listed companies as well of their group. They have got TPL Insurance, TPL Properties, TPL Tracker. So this is one of the group which has so many listed companies at Pakistan Stock Exchange. So Ali Asghar was involved in all the in the operations of many companies in the group. So I will like to ask some of the questions so that you get to know the listing process, the requirement. It has become much easier now with the efforts of PSX and SECP. Now the requirements are not that difficult, and companies can easily come to the IPO, come to the stock exchange, and bring their companies for listing. I would like to ask Ahmed Sahab, first of all, I would like to thank you so much for being here. Can you please elaborate the listing requirement for the audience, the listing requirement and the process for listing a company at Pakistan Stock Exchange? Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
I would like to first start off with saying that what the perception at this point in time is that listing is a very arduous and a cumbersome procedure. This is actually not the truth. Listing has become a very seamless process at this point in time. As far as the requirements are concerned, my esteemed colleague Ms. Raida had already informed. We start off with the criteria. The company, if you're going for the main board, we have two boards at this point in time. One is the main board and the other is the GEM board. For the main board, the company has to have a paid-up capital of 200 million, and it has to be a public unlisted company. And there have to be financial, it has to have financials for the past 2 years. And if you have all that, you can easily list on the stock exchange. The second thing is about the listing process. The process is again very simple. You have to make a listing application. All the processes, all the annexures, all the checklists that are given, they are given in the regulations at this point in time. You can go through the regulations. We have our chapter 5 of the PSX rulebook. It contains all the forms that are required, all the checklists that are required, the documentation requirements, and then we have our online software portal, which is called Pride, through which you can electronically submit your applications. The first and foremost thing that a company has to do is to onboard a CTI. A CTI is a consultant to the issue. Fortunately, it is a track holder, basically. Fortunately, we have very expert CTIs available in the market. The company can sort of onboard them. You have options to choose from them, and whatever suits your needs and whoever gives you the most benefit out of your financing needs, you can onboard them, and you can sort of then make a listing application to the exchange. Then for any, obviously you're going to solicit funds from the public, and for that there has to be some disclosure. And those disclosures are required to be given in the prospectus. The prospectus is a document which gives the company's brief, the purpose, and all the other things that are related to the company, the material contracts. And while reviewing, and this is all, let me tell you, Shahid Saab, it is all a very easy process. It's all online, paperless, and I'm proud to say that we can, sort of review them online. We can communicate with the CTIs and the company online, and we can guide them through the whole process without having to, sort of go back and forth on paper. So the whole procedure is easy. First and foremost thing, get connected with the CTI, onboard them, make a listing application, draft a prospectus, make a listing application, and then PSX will take you from there. I must confirm that, there were days in the past that, this process keeps going for many months, 3, 4 months, but now PSX and SECP has actually made the process very easy and very quick. And as Akif Sahab has just said, that it has become very, very shortened, 14 days and then 29 days. So this will definitely attract a lot of new companies to come forward and avail the timing of the market, because the market timing is very important, and our market sometimes gets volatile as well. Sometimes there are so many external events that can also play the role. So it is very important for our market to have a better timing, and they, mashallah, have playing a very important role in this thing. Sajjad Sahab, आप मुझे बताइए कि what are the additional requirements by SECP after the approval by stock exchange? What kind of additional requirements that you look at for the approval from the SECP? Thank you, Shahid Saab, and thank you, PSX, for inviting me on this panel, and all of you who are sitting here. And I'll just take this opportunity. It's very heartening that, we have a group of potential issuers, CTIs, and all of you on the same forum. And I'd really look forward if we materialize some applications from today's coming to the requirements, borrowing Musaddiq Saab's words, which were music to my ears, requirements are there in the regulations. Yes, the word regulation sometimes scares people, but they are definitely for the good of the company and its shareholders and all its remaining stakeholders.
So, all these requirements, it is not necessary at all in our view as well that compliance with the requirements would increase the cost burden. It can unlock a whole potential of opportunities, and you can really thrive in that. Now, coming to the specific question, sir, that you've quoted, what we look at once the application is submitted, now we have a 14-day window in which we are to approve the prospectus. So now PSX and SECP are simultaneously reviewing the documents and the prospectus. हमारी पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं. पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस में हमारे पास प्रोस्पेक्टस के क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या इनिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो फर्दर एलैबोरेट हो जाता है. थोड़ा सा अगर मैं आपको फ्रेमवर्क समझाना चाहूँ तो जो पब्लिक के पास फंड रेजिंग का प्रोसेस है वो सिक्योरिटीज़ एक्ट से हमारे स्टेम करता है. उसके अंडर हमने पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस बनाई हुई हैं और उसके साथ हमने पीएसएक्स की लिस्टिंग रेगुलेशंस बनाई हुई हैं. All those regulations are aligned with international practices, as simple as we could make them, and we are in the process. I'll get to that later. हम उसमें जो contents हैं, document submission है, उसके अलावा जो हमारा primary focus होता है, that is on the disclosures that are being made to the public, so that there is a better informed decision from the general public when they are participating in a company which was previously closely held. मेन फोकस हमारा इन्हीं चीज़ों पे होता है. डॉक्यूमेंट्स के लिए भी हमारे कोई ऐसे बहुत कम्बरसम डॉक्यूमेंट्स अब नहीं रहे हैं, फर्दर भी उनको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं. उसके अलावा एलिजिबिलिटी के लिए भी पीएसएक्स और हम लोग देख रहे होते हैं, बड़ी फंडामेंटल सी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं. उसमें पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ओनरशिप कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है. सो ये वाले एंगल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो एसईसीपी वैल्यूएट करता है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सज्जाद भाई ने जो कहा उसमें मैं आपको फर्दर ऐड कर दूं कि इसमें अब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटेटिव हो गई है. पहले थोड़ा सा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते थे, बट नाउ द प्रोसेस हैज़ बिकम वेरी क्वांटिटेटिव. इफ़ यू नो द चेकलिस्ट, you should have the checklist and you have to just comply with all the checklist requirement. So it's very easy if you have the audited accounts ready, and if it is not very far, I mean it's like 8 months long audited accounts or 6 months long audited accounts is fine. SECP is also working on the lines that only the calendar year account or the financial year account, whatever the audited accounts are there, so they should approve with those kind of accounts rather than doing audit again. So they are working on it. I don't know whether they will check with Sajjad Bhai later whether they are going to approve or not. I will also talk with Ali Asghar Sahab. Ali Asghar Sahab is on the other side. He's on the issuer side, and his group has got 3 companies, mashallah say, on the board: TPL Insurance, TPL Properties, and TPL Tracker. And mashallah से ये तीनों कंपनियां मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल में 10 साल में ही लिस्ट हुई हैं. So he has gone through all the process. So what is your experience, Ali Asghar साहब? कैसा आपका experience है? What benefits you have captured after getting listed? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. देखिए, benefits from the listing. One thing I would like to say. No bigger corporate in the world would say and can go to the next level if it doesn't open itself to collaborate with other players. Achha. They'll only come to see you, collaborate with you if you are listed. By listed, we mean you are following the best practices, you are transparent, you are well governed. So just to give you an example of our group, we have 2 decades of history and people sitting, I'm seeing, mashallah, they have like 60 and 70 years of track record. They are much more senior to us. But alhamdulillah, we were able to attract DEGs and fin funds and green oaks of the world to our group with their investments. That has benefited, obviously, Pakistan in terms of foreign inflows. But to us, not only in terms of liquidity, but in terms of value creation, in terms of learning from their learning curve, they are bringing value to the table. So that all has we were able to achieve this just because we were there, listed, transparent, well governed, and open ourselves. And you have attracted a lot of foreign investment as well. Yeah. Thank you. Good. Thank you so much. Okay, one thing that I want to show that
Uh, we have been actually, we've been very sorry that, the valuations have not gone up in this market. But let me tell you that even in the last 10 years, there are many success stories of those who came for an IPO and the market capitalization that they have achieved, mashallah say. They have grown multiple times in terms of market capitalization, even if they have listed in the last 10 years, because there is impression in the market that the last 10 years IPOs have not done well. But let me just tell you that when the system came, the listed market capitalization was just 4 billion. Today, the market capitalization is 120 billion. When Avencion came, the listed market capitalization was just 1.4 billion. Today, the market capitalization is 20 billion, and it was listed in 2015. So in just 9 years, the market capitalization have gone up, exponentially. Mughal Steel started with 2.8 billion of market capitalization in 2015. Today's market capitalization is 23 billion. I will say that Interloop started with 40 billion market capitalization in 2019. Today is over 100 billion. So even in last 5 years, last 4 years, there are success stories that people have to see, rather than just looking at those pictures that there is dull, there is lull period, there is no one coming. Yes, it is because the high interest rate environment. Yes, because today the valuations are low, but if the company is promising, if the company is good, if there is a good earning growth, then definitely investors will give higher price earning multiple for that company. Uh, and for that, I will ask Ahmed Basab that, since 2010, there are many companies. I mean, I think almost all the companies are coming through book building mechanism and not fixed price offer. Maybe because, it is quite beneficial for the issuer to go through that route. What do you think? What do you think that why each and everyone is coming through book building, whether the software is state-of-the-art software? Can you talk about everything about book building? जी अच्छा in this I to say one thing कि हमारा जो book building mechanism होता है it mimics an auction. Obviously auction के अंदर जो भी item auction हो रहा होता है that goes to the highest bidder. उसी तरह यहाँ पे एक Dutch auction method है जो हम employ करते हैं, which is first presented to the high net worth investors and the institutional clients. वो एक प्राइस सेट करते हैं, उसकी एक फ्लोर प्राइस दे देती है कंपनी, जो कि सीटीआई के साथ मिलके वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर डिस्क्लोज करती है. आफ्टर दैट होता ये है कि जी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है बुक बिल्डिंग का, उसके थ्रू वो लोग बिड करते हैं. एंड व्हेन उसका 2 दिन होते हैं, बिडिंग के 2 वर्किंग डेज होते हैं, उसके अंदर वो लोग बिड करते हैं और जो भी स्ट्राइक प्राइस आती है फ्लोर प्राइस से 40% का बैंड होता है उनका. लेट्स से इफ यू हैव गिवन 10 रुपीज़ फ्लोर प्राइस, तो यू कैन गो अप टू 14 रुपीज़. 40% के प्राइस बैंड के अंदर होता है वो. एंड देन दे कैन ऑब्वियसली बिड करते हैं, एंड वट एवर द प्राइस स्ट्राइक प्राइस जो निकलती है बिडिंग के बाद प्लस माइनस करके वो उसकी बन जाती है शेयर प्राइस. तो आई बिलीव कि बुक बिल्डिंग के अंदर देयर इज बेसिकली द पोटेंशियल फॉर अ कंपनी टू रेज मोर कैपिटल एज कम्पेयर टू अ फिक्स प्राइस, क्योंकि उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी एज सच नहीं होती है. हाउएवर फिक्स प्राइस के और उसके अपने थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपने फिक्स प्राइस में अंडर राइटर भी ढूंढना होता है, एंड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ गेट इट अंडर द होल क्या कहते हैं उसको आईपीओ प्रोसेस को, जितने भी फंड्स होते हैं उनको अंडरराइट कराना होता है आपने. वेयर एज बुक बिल्डिंग के अंदर भी होता है, बट देयर इज एन ऑप्शन कि अगर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर पहले एक सर्टन प्राइस के ऊपर ले रहा है तो जनरल पब्लिक को भी आसानी हो जाती है टू बाय दोज शेयर्स एट अ सर्टन प्राइस. And for that we have an automated procedure. In fact, जो उसका retail portion भी होता है, let me tell you, 75% is kept for those high net worth individuals and institutional clients, and rest of the 25% goes to the public. और वो procedure भी हमारा e-IPO के through electronic IPO कहते हैं हम उसको, वो पूरा automated है. तो आई बिलीव कि जो ऑटोमेशन है दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्शन और मे बी प्राइस डिस्कवरी, और मे बी इट्स अ बेटर एफिशिएंट मोर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म. तो इस प्रोसेस में अहमद भाई की बात को मैं थोड़ा कंक्लूजन करूं कि नॉट ओनली वैल्यूएशन थोड़ी बेहतर मिलती है इशूअर को,
बल्कि और इसके अलावा जो अंडरराइटिंग की कॉस्ट है, that also goes away. So there is no underwriting cost when you go through book building, because underwriting cost only applies at the fixed price auction. और ये प्रोसेस को मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे थे, when we were doing HBL and UBL transaction of $1 billion and $387 million of transaction, उसमें हमारे जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स थे, क्रेडिट स्विस और डोचे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे डच ऑक्शन मेथड को, एंड दे वर सेइंग दैट हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से, हम अपनी जिसकी रिलेशनशिप्स होती हैं उस क्लाइंट्स को, हम उस इन्वेस्टर्स को हम देते हैं, और उससे बाद में रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब भी होती है. इफ़ देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस, definitely then you have to follow that, and then you can't say yes or no to anyone. So it's a great system that stock exchange is following. Sajjad bhai, मैं आपसे पूछूंगा कि what are the recent key improvements in the IPO process over time? जैसे आकिब साहब ने भी कहा कि process बहुत shorten हो गया है. Now अब वो 3-4 महीने वाला process नहीं है, अब 29 days में पूरा हो जाता है और 14 days में approval process शुरू होता है. Can you talk about that? Can you shed light on that? Sure, ji. So just building from what Ahmed Saab also said, so there's continuity. ये जो book building का phenomena है, ये बिल्कुल हमने काफ़ी पहले introduce करा दिया था. It has really caught on now. Bottom line इसमें issuer के लिए ये है कि now you have complete freedom in terms of, if you are confident of the price that you want from the market, you can go through a fixed price method. And if you want to explore price discovery in terms of institutions and unlock your value through valuation by others and the general public, तो फिर आप book building के through जा सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो अंडरराइटिंग कॉस्ट वाली सर आपने बात की, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हमने अंडरराइटिंग कॉस्ट जहाँ पे कम करवाने का देखा कि जी द कॉस्ट, अगर इफ इशूअर्स आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर श्योर अबाउट देयर प्रोडक्ट, देन दे कैन कम इन 100% book building method. And in that 100% book building method, they do not need any underwriters, and the institutions and the high net worth individuals would take up their product and they would subscribe to the shares of the company. तो एक तो इनोवेशन अभी रिसर्च कराई है. उसके अलावा हमने काफ़ी सारी जो इरिटेंट्स थे वो हमने रिमूव किए हैं. प्राइमरीली हमारे पास जो फ्रेश कंपनीज़ हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, पहले देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5-year ट्रैक रिकॉर्ड, हमने अब वो 2 years के ऊपर कर दिया है. तो एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स अब हमें 2 साल के चाहिए, पहले 5 साल के चाहिए थे. तो जो हमारी एक इन्फ्लक्स ऑफ कंपनीज दैट कुड कम विच आर रिलेटिवली न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, वो नहीं आ सकनी थी. दूसरा फिर हमने सर ये किया कि हमने लॉस मेकिंग कुछ एंटिटीज़ होती हैं, ज़ाहिर है इनिशियल स्टेजेस में वी कम्प्लीटली रियलाइज दैट व्हेन अ कंपनी हैज स्टार्टेड एंड इट्स इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू पोस्ट सम प्रॉफिट्स. So the SECP took a leap and worked with the PSX, and we finally came to the conclusion कि अगर कोई loss making entity है तो पहले तो वो डिबार हो जाती थी पब्लिक. अब हमने ये किया है कि उस लॉस मेकिंग एंटिटी को अलाउ कर दिया है कि यू कैन कम फॉर एन IPO, बट अलॉन्ग विद योर ऑडिटेड अकाउंट्स आप हमें एक बिजनेस प्लान सबमिट करा दें. वो बिजनेस प्लान अगर आपका हमारे पास आ जाता है तो उसकी बेसिस के ऊपर हम आपको अलाउ कर देंगे फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड द पब्लिक विल हैव अ चांस टू एवेलुएट हाउ स्ट्रॉन्ग योर बिजनेस प्लान इज, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन ऑफर योर शेयर्स टू द पब्लिक. बाकी हमने फ्री फ्लोट की रिक्वायरमेंट्स 25% और 12.5% थी, नॉट गेटिंग टू मच इनटू द टेक्निकल्स एंड द नंबर्स, बट उनको हमने काफ़ी रैशनलाइज कर दिया है. इनिशियली अब वो 10% और 15% की रिक्वायरमेंट्स हैं. अगले 3 साल में आपने अब 25% तक जाना है. उसके अलावा सर ये आकिब साहब also mentioned, and with the Honorable FM also mentioned a lot of automation. Ahmed Abbas साहब has also mentioned a lot of automation. हमने इस टाइम पे जो IPO की प्रोसेस है वो हमने लॉन्च की थी, जिसमें CDC और PSX के इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन हो सकती है, which is completely online. So if you want to apply for shares of a company in an IPO, you don't need to visit a bank, you don't need to visit anywhere, you just sit on your laptop. उसकी जो पेमेंट है वो भी आपको ऑटोमेटेड है थ्रू अ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल. तो बहुत सारी इस तरह की डिजिटलाइजेशन की सहूलियात हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, वेयर इशूअर्स वी आर ट्राइंग टू हैंडल बोथ साइड्स,
कि इशूअर्स को इन्वेस्टर्स भी आसानी से मिल जाएं और जो इशूअर्स आ रहे हैं उनको भी एक कन्वीनियंस और ईज़ हो, सिंप्लिसिटी हो जिस प्रोसेस के थ्रू वो आ रहे हैं। तो इस तरह के इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोग और मेजर्स देखेंगे एंड यू नो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर फीडबैक फ्रॉम टुडे समिट। अगर इसमें कोई सजेशंस आती हैं, मोर देन वेलकम सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड सजाद भाई। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फील किया है, जो कि अभी रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स के अलावा, एक तो स्पीडी प्रोसेस हो गया है, और इसके अलावा जो सजाद ने जो कहा कि जो फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट है, जो एक पहले होती थी 12.5% एंड देन वी हैव टू टेक इट टू 25%, इट हैज़ कम डाउन टू एज लो एज 5% ऑल्सो। आई मीन इट इज़ 10%. For mid-sized companies, for a large capital companies, it's 5%. So it will definitely attract many companies in the environment where the market valuation is low. So people don't want to dilute much because the investors are not giving that much of value to the asset these days, to the equities asset these days, because the interest rates are quite high. तो अली भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि चूंकि इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पिचिंग investors to come to the equities, because I have seen that the mutual fund size में पहले 50-50 होता था between equities and fixed income. Today it is 90-10. 90 is fixed income and 10 is equities. Also goes with the insurance companies. Also, high net worth individuals are also tilting towards fixed income because the rates are quite high. So you are looking for your, inshallah, IPO for your REIT management company. So what are the reasons? What aspects you are looking that you will make investors ready for the equity IPO? Thank you. So, Shai Sahab, I would like to answer this into two phases. So, once, yes, you are right, rates are high. I mean, interest rates are high. But this is cyclical. This high interest rates are not here for forever. It's a cyclical. It may come down in 6 months' time, years' time. It will again settle down at some level of, let's say, 8%, 10%, 12%. It's whatever the economics tell. But when you are investing yourselves into an equity, so you are taking a long-term bet. So equity returns, if you analyze quantitatively with the historic numbers, will be unmatched with any fixed income bonds, instrument, anything, not here but around the world. Then it has its own flexibility there. Definitely, you're owning a piece of it. Then you can manage it if you are having some strategic holding or ownership. But by bond, your returns are always limited. Secondly, Honorable Finance Minister has said a very good thing, that government now not need put much stress on raising this debt money from this banking sector and then the individual. So usko kisi tarah ek diversify karna hai, so that crowding out factor should get away with, and that capital or that money from the retail and especially from the institution can be channelized into the capital market, where there is the right valuations will come into, and companies will reap benefits. जी जी बिल्कुल अली, थैंक यू। अच्छा, एक अहमद भाई, एक इम्प्रेशन ये है बहुत सारी कंपनीज़ का, और वो ये कहते हैं कि you attract for IPO, consultants are there everywhere to bring companies for listing, they raise money, and after that stock exchange post-listing requirement and compliance procedures are very tough. Is this so? If or the impression is not correct. So can you please elaborate on that, that the post-listing compliance procedures, post-listing requirements जो हैं, वो उनके लिए कोई stumbling block तो नहीं है? Once you include public in your company, obviously there is public participation, so you need to be transparent. Hamari compliance requirements are not that tough. They're basically disclosure requirements, and they're basically requirements that which are internationally accepted everywhere.
तो कंप्लायंस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आपने अपने क्वार्टरली अकाउंट्स, हाफ ईयरली एंड एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस करने होते हैं. Plus we have our correspondence manual available, which is also available electronically. ये भी I'd like to tell you कि जितनी भी आपकी communication होती है exchange से post listing, that is also online. दूसरी बात ये है, अच्छा, it's not that difficult to sort of report all these things because it is part of आपने वैसे भी file करने होते हैं returns to SCCP and everything. Just ये है कि थोड़ी बहुत filings बढ़ जाएंगी आपकी, ठीक है. That's about it. उससे ज़्यादा यहाँ पे disclosure requirement से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है. Material information आ गई. Obviously, whatever will impact the share price of your company, कोई ऐसी information, कोई ऐसी news, वो आपने share करनी होती है exchange के साथ, public के साथ. तो compliance requirements are basically disclosure based again. So those disclosures are necessary for any company. उससे ये होता है कि आपकी knowledge भी रहती है company की public को, and they can make well-informed decision. So compliance should not be taken as something which is actually burdensome. Rather, it should be taken as something which can improve your image and your quality. And I think Ahmed Bhai is correct. I think it is also important. I think this will also, pressure the management to work hard quarterly because it is good for the sponsors, it is good for the shareholders that the company is listed and the accounts are published every quarter. So, you try to work hard more, you have comparative analysis, people are looking at your accounts, they will be comparing with your other industry peers. So definitely it's a good competition, I think, if you get listed and the efficiency grows. I think this is so important, I think, for the founders and for the sponsors to be listed so that they can get the best out of their management, I think. Sajjad sir, आप बताएं, what are your planned initiatives for further developing the IPO market? What are the initiatives that you are going to take that, just give us a little idea about that. You can't actually disclose everything, but what are your initiatives? What are your vision that how will you grow the IPO market? And how facilitate you will make the regulations to have more and more IPOs in this market? Thank you, sir. There are a lot of areas that we're currently working on. There is a lot to assess, and we've gone down to the grassroots level. So even the minutest of irritants, we try to identify them, both from the issuer perspective and from the investor perspective. Again, we would like to harness the use of technology as much as we can, and PSX is supporting us in that. हम लोग भी खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी applications हैं, जितनी भी time एक तो सबसे ज़्यादा कम लगे. So we just recently processed an application. It was 7 working days, 14 working days. So we concluded that. तो एक तो ये कि we need to stick to those timelines, which our chairman also touched upon. Future में we're planning to shift to a disclosure-based regime, जहाँ पे rather than an approval of a prospectus, there could be registration of a prospectus. Again, that would require an amendment in the parent law, जिस तरह मैंने कहा था कि Securities Act उसको govern करता है. But apart from that, अगर मैं अभी फ़िलहाल जो low hanging fruits मुझे सामने अपने नज़र आ रहे हैं, उसमें हमारे पास application supported by blocked account एक thread चल रहा है. That is basically कि आज अगर एक investor किसी IPO को subscribe करता है तो his money moves from his account to the balloter's account, sorry. तो उसमें हम कह रहे हैं कि उधर ही उसी के अकाउंट में वो मार्क हो जाए ताकि 7 to 10 days का वो टाइम जो है जिसमें पैसा मूव होना है, पैसा वापस आना है, समटाइम्स उसमें डिलेज होते हैं. तो इन्वेस्टर्स को ये एक हेजिटेंस रिमूव कर दिया जाए. बुक बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ. बुक बिल्डिंग में हम ये चाह रहे हैं कि अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, क्योंकि मिनिमम बिड साइज़ 1 million का है, सो 1 million के मिनिमम बिड साइज़ के लिए ऑनलाइन बैंक्स की कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट्स ट्रिगर हो जाती हैं. सो वी वर्किंग वेरी क्लोजली ऑन दीज थिंग्स विद द SBP एज वेल, कि फ्रॉम अ बैंकिंग परस्पेक्टिव ये जो ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट है और बुक बिल्डिंग की जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स वगैरह हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लें. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्योंकि जो अली असगर साहब भी रीट का तस्करा कर रहे थे, सो वी आर टारगेटिंग दैट वी चेंज द लिस्टिंग रेगुलेशंस फॉर रीट्स
कस्टमाइज दैम इन अ मैनर कि वो रीट्स को स्पेसिफिकली एज अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट केटर कर सकें, और रीट्स की लिस्टिंग जो है वो सिंप्लीफाई भी हो जाए, और अगेन उसके डिस्क्लोजर्स और उसका कंप्लायंस भी बेहतर हो जाए. उसके अलावा वी फेस दीज we faced these discussions that duplication है documents में जो PSX में submit होती हैं, SECP में submit होती हैं. What we've done is we're preparing a consolidated checklist. उस consolidated checklist को हम roll out कर देंगे, तो then issuers would know from day one what they need to submit. It would be one package, one time, and they wouldn't have to come in bits and pieces. Lastly, I think in a lot of other reforms हम जो risk disclosures हैं, बहुत दफ़ा हम एप्लीकेशन जब देखते हैं तो रिस्क डिस्क्लोजर्स कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड, एंड उनके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं बिकॉज सब वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट हो सकती है. So now what we're trying to do is we're trying to roll out some standardized risk disclosures जो कि हर application में automatically first page पे आ जाएं. So rather than us going back to the issuer or imposing any condition on the issuer कि आप ये risk disclosures करें, वो एक standardized document हर issuer को available होगी. So I think all these things, and then again regulations, it's an ongoing process. हमारी public offering regulations, listing regulations में हमारे पास अभी भी suggestions हैं. Audited accounts की आपने बात की, yes, that can definitely be looked at, क्योंकि 8 महीने का period है कि अगर आपके last audited accounts हैं तो वो 8 महीने में आपका last audit हुआ. So we're looking at that. Can it be increased to 12 months? If it's possible, then why not? तो और भी बहुत सारे इस तरह के सर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, एंड वी वुड बी हैप्पी, वी विल वर्क वेरी क्लोजली विद यू एंड PSX एज वेल. तो इंशाल्लाह. Great. Thank you so much. Thank you so much, Sajjad bhai. This is a good news for all the consultants and for all the issuers as well. Ali Azhar साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि माशाल्लाह से your group has attracted a decent foreign investment in your companies, mashallah say, and it's all because the companies were listed, companies have good valuation, and that's why based on that valuation the companies got good foreign investment. So do you agree that there are further more opportunities? If what kind of more opportunities you think that can be drive to attract more and more foreign investment in the country if we get listed? So what's your idea on that? Shah Sahab, as far as we are concerned, I think because the idea is that that our foreign investment, what I see is that when we were $100 billion of market capitalization, our foreign investment was 8 billion rupees or 9 billion rupees. Today, if the market capitalization is $33 billion, our foreign investment is around 600 to 700 million. So it has come down much higher, much higher than the percentage of the reduction of the market capitalization. So market capitalization is 1/3, but the foreign investment from 8 billion to just 500-600 million rupees. So we have to make steps to attract more and more foreign investment. So what kind of areas? Because you mashallah are getting good foreign investment in your companies. So what areas you think that we should do, or the regulator, or the investors, or this community should do to attract more and more foreign investment, apart from those steps that the government has to take? We can't touch those steps where government has to take, but other than that. देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चैनलाइजेशन, मुसद्दिक साहब ने बहुत अच्छी एक बात की कि ESG को आपने टारगेट करना है. एंड ESG अगेन टू मी, ठीक है, एक बॉक्स टिक करने से ज़्यादा व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट सोसाइटी बाय यूजिंग दैट रिसोर्सेज. गवर्नेंस पे हम सब ने बात कर ली. सस्टेनेबिलिटी को आप कितना फोकस कर रहे हैं, वेयर द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन इज कमिंग फ्रॉम. सेकेंडली, मैं समझता हूँ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नाउ वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन फ्यू सेक्टर्स. देखिए, हमें पास्ट में मसला क्या रहा है, डिविडेंड रिपैट्रिएशन वाज वन. अभी भी आई वाज अब्रॉड, मैं कल रात को ही आया हूँ, स्पीकिंग टू फ्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स. एक उनको लीगल सिस्टम पे क्वेश्चन आता है. सो उसको मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्टेप्स लेके इम्प्रूव कर सकती है. हम कुछ कॉर्पोरेट लिटिगेशंस के लिए कुछ सिस्टम इस तरह का बना सकते हैं कि जो स्पीडी हो.
अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू जो सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आप कहें शायद भाई गई है विद रिस्पेक्ट टू जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी कम हुई है, उन सेक्टर से ये कि देखें आपको इंसेंटिवाइज करके, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस समिट एज वेल, कि आपके बहुत अच्छे आई वुड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं हु डजंट वांट लिस्ट। सॉरी, क्या? एक एससीसीपी अपना काम कर वहाँ उनको करके उनको लिस्ट करवाना है टू एंड मेक देम अंडरस्टैंड टू फ्री अप देयर कैपिटल from there, let's say 49% फ्री करें, 51% रखें, and that 49 they need to invest into other local infrastructure asset and bring those foreign investment into that export oriented sector. तो ये डिविडेंड रिपैट्रिएशन वाला इशू आपका एक लूप सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सपोर्ट अर्निंग से आपने डिविडेंड पे करना है। हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये की कि हम ऐसे सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लिया है, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ नहीं लानी थी, जहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं हो रही थी, मतलब एक्सपोर्ट जनरेट नहीं हो रही थी। सो दैट्स वेयर दिस डॉलर रुपी करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेम्स फ्रॉम। सो इस चीज़ पे भी काम करके हम इस बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, तो वो उसकी शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी डिविडेंड रिपैट्रिएशन की। सो रायदा मुझे कॉल कर रही हैं कि अब बस मैं आखिरी क्वेश्चन अहमद साहब आपसे पूछूंगा कि what can you say about the GEM board, because there are many opportunities for the mid-size or small-size companies to come for listing in the GEM board, and they can use this board for their capital raising, for their equity raising. So what are the improvements over there, so that most of the companies who can avail this opportunity, I think this can also improve our market capitalization. I think हमारा जो जेम बोर्ड है, it gives an excellent opportunity to small and medium size enterprises. वैसे तो इस पे कोई कैप नहीं है, बड़ी भी आ सकती हैं कंपनीज, इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज as well, but for small and medium size companies, startups, हमारा जेम बोर्ड जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, rather than going into shareholder agreements, exclusivity clauses and all those things that sort of hamper your growth or make you bound to certain things. यहाँ पे आए, बहुत ही easy way है, information memorandum issue करें, एक CTI को on board करें और अपने आप को list कराएं, give yourself to the public, they'll decide what to do. Abhi at this point in time, we are working on, allowing the general public in it. At this point in time, we have accredited investors, which include high net worth individuals and institutions that can invest in you. If they like your idea, they'll obviously invest in you. So, आपके पास एक बहुत अच्छी opportunity to grow while listing on the GEM board. And then you have the opportunity, और इसके अंदर हमारे पास code of corporate governance की भी relaxed थोड़ी सी requirements हैं, plus ये कि disclosures की भी थोड़ी कम requirement as compared to the main board, क्योंकि कंपनीज छोटी होती हैं। ग्रीन फील्ड भी आ सकती हैं हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड, एंड दे कैन स्टार्ट ऑफ विद कैपिटल एज लो एज 25 मिलियन, पेड अप कैपिटल ऑफ 25 मिलियन। तो बेसिकली so there's a big difference between 25 million and 200 million. जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली ग्रीन फील्ड जितने भी हैं, वैसे तो हमारे मेन बोर्ड पे भी आ सकते हैं, जितने भी हैं ग्रीन फील्ड आपकी कंपनीज, वो भी आके लिस्ट करा सकती हैं हमारे प्रोजेक्ट। अच्छा, अकील भाई जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक सवाल पूछने का। अकील भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो IPO के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो IPO कैसे आ सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में 0.6 बुक वैल्यू पे शेयर्स मिल रहे हैं, और जब IPO आता है तो वो बुक वैल्यू से डबल वैल्यू पे पैसे मांग रहा होता है। तो आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि इशू जो है उसको क्यों एड्रेस नहीं करते। सर, SCCP एंड PSX आर वर्किंग ऑन इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इंशाल्लाह इसको ज़रूर एड्रेस करेंगे इस इशू को, क्योंकि समिट का बेसिकली मकसद आपका फीडबैक भी है। आपके फीडबैक को ऑब्वियसली हम लोग वैल्यू करते हैं सर, विद योर एक्सपीरियंस एंड ऑल। ठीक है, एंड आप डेफिनेटली वर्क ऑन इट। नहीं, इसके ऊपर काम आप क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी जिसकी बुक वैल्यू 200 रुपये है, और आप उनको अलाउ करते हैं कि 50 रुपये में शेयर ख़रीद के अपने आप को और मजबूत करें और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को और तबाह करें। सर बेसिकली नहीं, हम लोग अपने उसमें वैल्यूएशंस के एग्जांपल इन्होंने जैसे कोट किए शायद साहब ने कि आजकल वैल्यूएशंस वैसे ही लो हैं हमारे यहाँ, तो कंपनी तो वैसे ही लो वैल्यूएशन। अकील भाई उसमें तो वॉलंटरी है ना, अगर किसी को बेचना हो तो वो बेचे, किसी को नहीं बेचना हो तो वो ना बेचे। मतलब वो तो एक एवेन्यू प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आपकी बुक वैल्यू नीचे ज़्यादा है और मार्केट की प्राइस नीचे है
और कंपनी अगर अपने शेयर ले सकती है तो वो कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी को नहीं बेचना और वो कंपनी के साथ, कंपनी के स्पॉन्सर्स के साथ रहना चाहता है तो वो रहे, और वो अपनी वैल्यूएशन उसकी जब तगड़ी हो जाए तो वो भी उसका बेनिफिशियरी होगा। 40 साल से लोग बैठे हैं इन्वेस्टर, कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो उनको पे करेगा? अगर कोई कानून साजी होगी जी, तो फिर कोई बात आगे बढ़ेगी ना। आप मुझे ये बता दें, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के कोई 4 डिसीजन बता दें जो पिछले 50 साल में हुए हो। चलो, आप जब तक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आपकी नए आईपीओ नहीं आ सकते, ये मार्केट ग्रो नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अभी जो हम बातें कर रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरी है, तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन तो डॉलर में गिरी है ना, रुपये में तो नहीं गिरी। आप जब $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन थी तो 100 बिलियन डॉलर का 6,000 अरब रुपए बनते थे। आज 33 बिलियन डॉलर मार्केट ये है तो आज 9,000 बिलियन है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ी है रुपये में, क्योंकि हम तो रुपये में बिजनेस कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें इस वक्त बैठ के जो सोचना चाहिए कि क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो हम कर लेंगे तो यहाँ आईपीओ की लाइन लगी होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट के बारे में बात करें। आप आईपीओ में ये कर दें, सुबह अप्लाई करें और शाम को परमिशन दे दें, फिर भी कोई नहीं आएगा। हर्डल्स ये नहीं है, हर्डल्स सिर्फ माइनॉरिटी शेयर और कुछ भी हर्डल्स नहीं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। मैं फ़ारूक भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और आकिब साहब मिलके अकील भाई की गाइडेंस लेके एक स्पेशल कमेटी बनाएं जो कि इसके ऊपर काम करे, और इसको इस तरीके के रेगुलेशंस, इस तरीके की जो हम एडवाइजेस दें गवर्नमेंट को भी, कि जिससे हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंप्रूव हो और फिर आईपीओज़ की, जैसे अकील भाई कह रहे हैं, लाइन लग जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो अब हमारा दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।